सो आम नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिया पे एटा हो नीट क्वेश्चन देखि परछ ये हो नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक अछि एटा नीट क्वेश्चन तो क्वेश्चन कौन अच्छे हमें पढ़ा इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड as eta to the power x, rho to the power y, r to the power z, where eta, rho and r are coefficient of viscosity of liquid, density of liquid, radius of the tube respectively. Then the value of x, y, z are given by dash. तो चारिटा ऑप्शन अच्छे चार्टा ऑप्शन भितर कोटा करेक्ट ऑप्शन हमें बाछिबा ठीक अछि सो दैट क्वेश्चन इज गिवन इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ eta to the power x, rho to the power y, r to the power z, where eta is equal to coefficient of viscosity, r is equal to rho is equal to density, r is equal to radius of the tube. Okay, we have to find x, y and z. So dimension of critical velocity. Okay, so dimension of critical velocity, dimension of critical velocity, that is VC, is equal to distance by time, that is so equal to distance by time. So it's nothing but dimension of VC is equal to, so that is no mass turn. So in case of mass turn is absent, so m0 L1 t to the power minus 1. This one the dimension of critical velocity. Okay, dimension of coefficient of viscosity, I have to find coefficient of viscosity, that is eta. So we know that F is equal to 6 pi eta RV, 6 pi eta RV. So that is eta is equal to F divided by RV So dimension of eta is nothing but dimension of force m1 L1 t to the power minus 2 divided dimension of radius is L1, velocity is dimension of velocity L1 t to the power minus 1. Okay, so we get dimension of eta is nothing but m1 L to the power minus 1 t to the power minus 1. This one the dimension of eta. Okay, so dimension of eta is nothing but m1 L to the power minus 1 t to the power minus 1. This one the dimension of eta. Now density, dimension of density that is rho. Dimension of density is equal to mass by volume. So dimension of density is equal to dimension of mass m, volume is L to the power 3, t term is 0. So this one the dimension of density. So dimension of density is nothing but, so m to the power 1, L to the power minus 3, t to the power 0. Okay, another term is radius. Dimension of radius, okay, dimension of radius that is r is equal to L. Okay, according to question, dimension of critical velocity is equal to eta to the power x, rho to the power y, r to the power z. So we can write the dimension, so that is dimension of critical velocity, already calculated dimension of critical velocity here m0 L1 t to the minus 1.
So m0 L1 t to the power minus 1. This one the dimension of critical velocity. So is equal to dimension of eta. Dimension of eta is nothing but already calculated here. m1 L to the power minus 1 t to the power minus 1 to the power x. Dimension of rho is already calculated. m1 L3 t to the power 0 of y to the power y. Dimension of L is equal to radius L to the z. Okay, now we have to calculate it. So m0 L1 t to the power minus 1 is equal to power of m. So is 1 only x plus y. L minus x, here minus 1 into x, minus x, and minus 3 into y, minus 3y, and t minus x, minus 1 into x, minus x, and 0 no t term. So L term is here and z another, minus x, 3y, and z. Okay, now equate the powers of m, L, t from both sides. We get. So in case of here x plus y, m term is x plus y, L term is x, 3y, z, and t term is x. तो आगे t को हमें सॉल्व करिए. For t minus x is equal to minus 1. Okay, therefore x is equal to 1. So x is equal to 1 है. तापर for m को हमें जीवे सॉल्व करिए. For m को कौन करिए? x plus y रो m पावर केते 0 अछि. m पावर केते अछि? 0 अछि. तो एटी हमें कौन मिलबे? implies x is equal to minus y. ता माने एटी y लिखि परिबा. तो y is equal to केते? minus 1. काने x रो वैल्यू केते 1 अछि ना नै? तो x रो वैल्यू 1 पुट करले minus 1 हे जिवो. एबे हमें कहार वैल्यू बाहर करिबा? L रो वैल्यू. For L रो वैल्यू हमें केमि बाहर करिया बेले? minus x minus 3y plus z is equal to L रो वैल्यू केते 1 अछि ना नहीं. एटी पुट करिबा. पुट values of x and y in the above equation. ठीक अच्छे. ये आम पुट करवा. तो पुट कले कौन हम? एक्स वैल्यू के -1 माइनस 3 इंटू वाई वैल्यू के -1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1. ताले के -1 प्लस 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 1. ताले एटा केते हो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1. ताले जेड केते हला बेले जेड इज इक्वल टू -1. ता माने एटी हमें करेक्ट आंसर मिले x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1. तेणु ये हूँ आमर करेक्ट आंसर. तेणु ये देखा करेक्ट आंसर कौटा हम. तेणु करेक्ट आंसर 1 1 -1 -1. तेणु ऑप्शन सी इज करेक्ट. तेणु पे ये हूँ नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक अच्छे. तेणु ये नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तेणु ये क्वेश्चन को मुझे चैप्टर हूँ यूनिट आ डायमेंशन चैप्टर अच्छे. ठीक अच्छे. तेणु को मुझे बिट बाय बिट सॉल्व करदेली. देख तेणु क्वेश्चन फास्ट पढ़ भल भाव में तापर तुम निश्चित सॉल्व कर न पढ़ले को क्वेश्चन को सॉल्व करिया तुमको डिफिकल्ट हम. ठीक अच्छे. आउ थे देखी दियो केमती मुझे सॉल्व कली बिट बाय बिट. पे मैंने देख को ओके. जदि वीडियो भल लगी लाइक कर शेयर कर आउ सब्सक्राइब करने भूल ना. ठीक. थैंक यू फॉर योर वाचिंग. थैंक यू.